Good morning, students. How are you all? I hope you all will fine. Today we will start our topic, that is government and employment generation. How many initiative that was taken by the government to improve this situation? Because without the employment generation, without not having any type of employment opportunity, income is not generated, and without the source of income, poverty will occur only, and it will not helpful for the economic growth and development. Because mostly in large sector economy, when we talk about the large industry, they are focused more on private profit maximization rather than focus on the social welfare. They are not taking social welfare as in their priority list. So basically, some government is the only one who taking these initiative to employment generation for each and every section of the society, the people who are living in the country. Basically, government try to improve this system. Government try to eradicate the poverty. By whom? By which method? By giving the employment opportunities to all the people and try to eradicate this poverty. The one of the main aim that is taken by government or initiative that was taken by the government, one only, that is the social welfare. And how social welfare, economic stability will be occur? By providing the employment opportunity to all the people who are living in the country. If government has taken so many initiatives so that the improve will be there and economic growth and GDP will increase, not without providing the employment opportunity. Jobless growth, there will be no benefit in our country if growth will be there without providing the employment opportunity. Jobless growth will be there. That means GDP growth is increased, national income is increased from, but by which cost and what is the circumstances and condition? Means not providing the employment opportunity. So for these things, government has taken some initiative, because when we talk about the private sector, they will not take any type of initiative, because the aim of private sector is one only, that is profit maximization. But when we take in the government aim is social welfare. Economic stability will be there. There is the aim of the government. So for our topic is all about these only. Government means taking the main participating and leading role of the government to improve the system, to providing employment opportunity to the people, and they try to remove the system and they try to remove the poverty. Because if everyone having the source of income, by giving them job, they getting the job, and now they having the source of income, they having the money, and with the help of these money they can improve their standard of living, they can enhance their quality of life. Basically, in this, students are advised not to these points, because these all are points is very important for the initiative which was taken by the government to improve this system. Because our chapter is all about these only, employment. बेसिकली हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? रोजगार की. अगर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी? उनके पास इनकम ही नहीं होगी. So basically when we talk about this problem of unemployment is essential to, अगर बेरोजगारी की समस्या है, which means there is a problem of poverty, गरीबी ऑटोमेटिकली होगी, because they do not have the source of income. पैसा ही नहीं है, और वो पैसा किस वजह से नहीं है? क्योंकि काम नहीं है. Because workforce are not there. Labor force is more than the workforce. In labor force, those people are also include who are willing to work, are able to work, but not having the work, and plus those people also who are actually working. We are taking both in the labor force. Workforce is not there. If more workforce is there, which means all the people who are living the country, they having the source of income by having the job, employment opportunities there. So first one is all about problem of unemployment. अगर बेरोजगारी की बात करें या वो problem, basically what is this? The problem of poverty. Automatically poverty will be there if they do not have any source of income, which means if do not have the employment. Next, in this policy and program initiative by the government, so many steps which was taken by the government
to eradicate this poverty, and how this poverty will be reduced by providing the employment opportunity. If all the people who living in the country having their job, having their work, from these only they can remove the poverty, or they can set a level so that at least every people who are living the country not considered in the BPL, they are not considered in the below poverty line, which means they can easily complete their essential goods, they can easily fulfill their basic need. And food basic needs or essential goods, which means I'm talking about the food, clothes, shelter and water. So these, the government has taken so many steps so that they can reduce the poverty level, or eradicate poverty means remove and reduce the poverty, and largely focus on, and how they are doing this work. So focus on the employment to the people, and especially those people which are considered in the poor section of society. Because people who have the rich, why we are saying these people rich? Because they have the source of income, they having proper employment opportunity. But government try to cover this gap between the rich section and poor section of society. Because if some people having employment opportunity and those people who do not have enough employment opportunities, it basically create a gulf between poor and rich section of society. Some people having the rich section, consider in the rich section, they can enhance their quality of life because they have the source of income. And poor are so much poor, like they are not survive in the country because they do not properly fulfill their essential goods. And for remove this section, or basically remove this gap, government has taken so many initiatives. From how these initiative will be fulfilled, by providing the employment opportunity to those and to the people who are living in the country, means providing employment to the poor section of the society. We have already discussed, I know in chapter 5 we had discussed about so many initiatives, so many investment which was taken by the government, especially when we talk about the NEP, new economic policy, in which we did the topic that is LPG, liberalization, privatization, globalization, which was replaced by LQP. LQP, I'm talking about license, Q means here quota, and P means permit. And with the help of government, they have removed all the things. Means in liberalization is basically known as free from the license. And when we talk about the privatization, means public ownership rights taken to the private sector, so that private sector can improve the standard of living. And when we talk about globalization, means full globe is considered as a single market. We can easily do our trading activity, which means we can easily do export and import activities. Clear? We students are advised for this chapter, you can easily understand with so many initiatives which was taken by the government, so that the gap will be covered, which means between the poor and rich section of society. Advice to chapter for the comprehensive. In this chapter, you can easily understand the initiative which was taken by the government to improve the system and to generate employment opportunities to all the people who are living in the country. अगर सरकार की बात करके, सरकार ट्राई तो करते हैं ना कि ये इम्प्रूव हो जाए सिस्टम, उसके लिए सरकार ने इनिशिएटिव भी लिया है. अगर वो इनिशिएटिव 100% वर्क नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 50% तो वर्क कर पाए. उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पहले काम नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉलिसी विच वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट, नाउ दे हैविंग द सोर्स ऑफ इनकम. How means they having the employment opportunities. Clear? For the sake of emphasis, we would like to repeat, of course, so that the improving system will be there. We will continue and we will further discuss this topic and further discuss the initiative which was taken by the government to improve the system. Latest step taken by the government. In this first view, we will write about National Guarantee Employment Act. Basically, in this 100 days, for the 100 days, each and every people who are living in the rural area having the source of income. By whom? By which means they having the employment opportunities now. It is National Rural Employment Guarantee Act. इस एक्ट की बात कर रहे हैं. नेशनल मीन्स हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं. एंड व्हेन द वर्ड इज देयर रूरल, बिकॉज इन द रूरल मोस्ट ऑफ द पीपल ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर ओनली. एंड एग्रीकल्चर यू ऑलरेडी नो इट इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन, it is a one of the risky business because it depends on the rain, it depends on the nature, or we can't
compare the things with the nature. So in this, people, government has taken initiative for the, especially for the those people who are living in the rural area, who do not have proper enough jobs in the secondary and tertiary sector. They are doing the work in the primary sector only, that is of farming jobs, agriculture sector, or non-farming jobs they do not have, because secondary and tertiary sector are not providing enough job for those people who are doing work in the primary sector. क्लियर. सो इट प्रोवाइड गारंटी वेजेस. अब ये गारंटी दे रहा है कि लेबर को क्या है, प्रॉपर वेजेस मिलेंगे, और कितने डेज के लिए, फॉर द 100 डेज, employment for the 100 days, especially and talking about those people only who are living in the rural area. क्योंकि जो अर्बन सेक्टर में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, उनके पास फिर भी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो एटलीस्ट दे कैन सर्वाइव इन द इकोनॉमी. वो कंट्री में सर्वाइव करने के लिए है, कम से कम उनके पास इतना इनफ तो है ना कि वो, दे आर नॉट टेकिंग इन द बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, दे कैन इजिली सर्वाइव इन द कंट्री बाय फुलफिल their essential goods, which I am talking about: food, clothes, shelter and water. Clear? So in this, it provide guarantee wages employment of 100 days all those people who are living in the rural area, who are below poverty line, और स्पेशली वो किस रेखा में आ रहे हैं, हम बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, निर्धनता रेखा. एंड दीज आर दैट वन लाइन इन विच पीपल आर नॉट कंप्लीटली फुलफिल देयर एसेंशियल गुड, completely fulfill their basic need. That is, I am talking about food, clothes, shelter, कि वो रहने के लिए घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है. अगर वो ही चीजें लोगों के नहीं है, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट सोर्स ही नहीं है. अब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? वो पैसा ही नहीं होगा तो वो अपनी एसेंशियल गुड्स ही नहीं. तो उन लोगों के लिए जो बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि 100 गारंटी दी कि इनको 100 डेज के लिए क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम मिलेगा, और उस काम के थ्रू दे आर in taking those people who are able to work and willing to work. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, काम तो मिल जाता है पर लोग काम नहीं करना चाहते, तो हम उसको तो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते. अब उन लोगों के लिए काम अवेलेबल भी है, और ऐसे ही होता है, जो लोग काम करना नहीं चाहते ना, उनके लिए इजीली काम मिल जाता है, और जो जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं, दे ट्राई टू वर्क हार्ड, और वो इनिशिएटिव ले रहा है, उनके लिए कभी कभी क्या है, उन्हें ऑन द टाइम वर्क काम नहीं मिलता. ठीक है, तो बेसिकली हम उन पीपल को ही कंसीडर करेंगे हु आर विलिंग टू वर्क और एबल टू वर्क, दे हैविंग द मैन पावर स्किल्स एंड दे हैविंग द कैपेबिलिटी फॉर डूइंग द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट विच दे आर विलिंग टू वर्क. एक वेज रेट डिसाइड हो गया कि उसमें विलिंग है काम करने के लिए. अगर फिर भी काम नहीं मिल रहा, देन वी आर टेकिंग दोज पीपल इन द अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी. वो बेरोजगार है, और जिनके विलिंग है काम, जो काम ही नहीं करना चाहते, दे डू नॉट वांट टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वी आर नॉट टेकिंग दीज पीपल इन द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जो विलिंग है काम करने के लिए और एबल है, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द डूइंग द वर्क एट वेज रेट दैट इज ऑफर बाय द गवर्नमेंट. उन लोगों को लेके आया है गवर्नमेंट ने, एक्ट बना दिया, जिसके द नेम ऑफ द एक्ट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. अब अगर इस चैप्टर के अंदर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करें, तो बेसिकली यू विल राइट अबाउट दिस एक्ट ओनली. एंड व्हाट इज दिस एक्ट शोज कि मींस रूरल एरिया में जो लोगों को वेज प्रोवाइड करना, और वो वेज कैसे होगा, जब उनके पास काम होगा. दे हैविंग द सोर्स ऑफ इनकम बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट for those people who are living in the rural areas. And for how many days, you will write 100 days in this. Next, when we talk about in this, and chapter 5 you have already done about the policy and program which was taken by, and the step which was taken by the government. So however, we would like to add in this, you will add and you will write about NEP also. NEP I am talking about LPG, which was replaced by LQP. कब आई थी ये पॉलिसी? इन 1991 ये पॉलिसी आई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. इसी पॉलिसी को क्या नाम दिया गया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. देन यू कैन राइट सम लाइंस अबाउट दिस ओनली. क्लियर? सो एनईपी परस्यूड इन 1991 कंसीडरिंग, जिसके अंदर हमने पहले देखा था बेसिकली डायरेक्ट रोल, प्राइमरी रोल, लीड रोल किसका था? दैट इज ऑफ गवर्नमेंट ओनली. क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर, देन देयर एम इज वन ओनली, दैट इज सोशल वेलफेयर.
they are thinking about people only, not only the profit maximization. वो सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल जस्टिस, ये एम को कंसीडर करके लेके चलेंगे, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे यही होंगे. कंसीडर क्रूशियल रोल ऑफ द गवर्नमेंट जनरेटिंग, और वो सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि जितने लोग जो काम करना चाहते हैं, हु आर विलिंग टू वर्क एंड able to work at the existing wage rate which are provided by the government, उन सबको काम मिलना, उन सबको employment opportunities मिलना. NEP involved massive drive towards privatization, ये भी दिया. So obviously when the size and scope of public sector कम हो गया, then role of the government as of generate employment opportunity bound to shrink, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने वो ओनरशिप राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर प्राइवेटाइजेशन, जो हमने एलपीजी में ये था प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जो ओनरशिप राइट गवर्नमेंट के सेक्टर में थी, नाउ दे आर गिविंग द ओनरशिप राइट टू द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि इस पॉलिसी से पहले गवर्नमेंट ही जो लीडिंग रोल प्ले कर रही थी, तो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर को आगे आने ही नहीं दे रही थी. वो इतना ज्यादा लीगल वर्क करवा देती थी, पेपर वर्क इतना हो जाता था, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती थी बिफोर दिस पॉलिसी, दैट इज एलपीजी. तो बेसिकली क्या होता था उसमें, इन मेन रोल किसका हो जाता था, वो था सरकार का. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी एंड अंडर दिस पॉलिसी एलपीजी प्राइवेटाइजेशन, बेसिकली क्या होता है, पब्लिक अपने ओनरशिप राइट किसको हैंड ओवर कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर रही है. उससे होगा क्या, गवर्नमेंट को एक तो ओनरशिप राइट प्राइवेट का, गवर्नमेंट को उस टाइम पे जो डेफिसिट की सिचुएशन थी वो कवर अप हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को क्या सेल ऑफ कर दिया था प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट क्या हुआ था, उनको ओनरशिप राइट मिल गया था. नाउ दे नो दे हैव टू डू वर्क विद द 200% एफिशिएंसी. द अनदर वन अल्टरनेटिव इज नॉट देयर, कि अब ये नहीं है कि सरकार, अब वो ये ऑप्शन भी नहीं रख सकते कि ओनरशिप राइट सरकार के हाथ में, सरकार ने अपने शेयर सेल ऑफ कर दिए थे प्राइवेट सेक्टर को, विच इज ऑल्सो नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, वो शेयर सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ओनरशिप राइट आ गया, दे हैव द कंट्रोल. अब उन्हें पता है अगर वो प्रॉफिट चाहते हैं या अगर वो काम करेंगे, अब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट नाउ प्रोवाइडेड द सोर्स ऑफ इनकम एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय गिविंग देम द ओनरशिप राइट एंड बाय गिविंग देम द पावर, और यू कैन से दैट कंट्रोल. सो अब प्राइवेट सेक्टर को पता है अगर उन्हें काम करना है प्राइवेटाइजेशन के अंदर या उन्हें ग्रोथ चाहिए, दे हैव टू डू वर्क विद 200% efficiency. They do not have another alternative option. So in this you will write about privatization also and some initiative which was taken by the government in the private sector. तो अब उसके थ्रू क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप राइट श्रिंक हो गया, वो कम हो गया. सो गवर्नमेंट बोथ एंड द सेंट्रल और स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है टू इम्प्रूव द सिस्टम, टू इम्प्रूव और इरेडिकेट द पॉवर्टी लेवल. So play a important role by providing the employment opportunity to the people. Now they having the source of income directly or indirectly. अब वो directly, जैसे नेशनल गारंटी एक्ट पड़ा था रूरल एरिया में, वो डायरेक्टली था कि आपको 100 डेज के लिए वर्क मिलेगा जो काम करना चाहते हैं, और वो वेज रेट क्या है गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है. ठीक है, तो डायरेक्टली और कभी कभी सब्सिडीज प्रोवाइड कर भी, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है ताकि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो गैप है रिच के कंपेयर में वो खत्म हो जाए, और गैप भी अगर खत्म ना हो तो एटलीस्ट दे आर नॉट कंसीडर इन द बीपीएल, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में तो ना आए, वो इतने तो कैपेबल हो जाए कि अपनी एसेंशियल गुड्स के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्योंकि आप दूसरे पे किस लेवल तक डिपेंड हो पाओगे, बोरोइंग कितनी कर लोगे, चाहे वो फैमिली में ही क्यों ना हो, एक पॉइंट के बाद तो लगेगा कि इट्स अ पीक टाइम, नाउ वी हैव टू डू वर्क, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव इन द इकोनॉमी. क्लियर है, तो इकोनॉमी बेसिकली वो स्टेट ही हो गई ना, वो सिस्टम हो गया जहां पर लोग कमा के रह रहे हैं. Clear? So, in government creates employment directly by providing the employment opportunities and providing some subsidies and initiatives so that improve will be there. People in public sector enterprises, government run hotels also and infrastructure are improving. और जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा लोगों के पास सोर्स आएगा, रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, हाईवेज बन रहा है, तो वहां पर भी तो लेबर की रिक्वायरमेंट है फॉर डूइंग दिस वर्क, और जितना टाइम तक वो बनेगा उतने टाइम तक लोगों के पास क्या होगा, लेबर्स के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी. तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ली है, और वो इनिशिएटिव अगर हर सेक्टर में वर्क नहीं कर पाए तो अगर 100 में की बात करें 50%, 20%, 30%, कुछ में तो कैटेगरी में वो लोग इन्वॉल्व हुए ना जिनके पास पहले काम नहीं था लेकिन अब आ गया, और वो अब काम क्यों आया, क्योंकि सरकार ने इनिशिएटिव लिए.
So transport company also, so that all the people, all not because some people at least having now their source of income, means they having the employment opportunities. When the output of goods and services were taken by the government owned enterprises increase, तो प्राइवेट सेक्टर का भी, क्योंकि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड में, ये किस में होता है, सेकेंडरी सेक्टर में, विच मींस टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज ओनली, गुड्स फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज इंक्रीज। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, विच रिसीव रॉ मटेरियल फ्रॉम, वो किससे ही ले रही है, सरकार से ही ले रही है, क्योंकि सरकार ही को ये इंडस्ट्रीज रन कर रही है कुछ, ऑल्सो इंक्रीज, इनहेंस इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्री जितनी ज्यादा डेवलप होगी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, इन सब एक्टिविटीज के लिए भी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। अब लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, ऑटोमेटिकली क्या है, लोगों चाहिए हमें तो काम करने के लिए, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, उन लोगों को काम मिलेगा। दस द गवर्नमेंट इन दिस केस जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ गवर्नमेंट क्या है, इनडायरेक्टली सही लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, तो कुछ इनिशिएटिव सरकार ने लिए डायरेक्टली, सम आर टेकन इनडायरेक्टली। From those initiatives, it improved the standard of living of the people. Now it increased the quality of life. For example, government owned steel company, it what is does means it increase the output, result क्या increase हुआ। अब जो input लगाए हैं वो क्या है, labor work कर रहे हैं, तो raw material are taking in the example of input only, it will result direct increase in employment। अब ये government company के लिए employment बढ़ रहा है, अब employment बढ़ने का मतलब labor के पास, लोगों के पास काम आना। साइमल्टेनियसली अगर साथ साथ बात करें प्राइवेट कंपनी की, विल परचेज स्टील फ्रॉम इट, वो क्या है, जो गवर्नमेंट के अंदर कंपनी रन कर रही थी उनसे स्टील क्या है, परचेज करेगी। इट विल ऑल्सो इंक्रीज, वो भी आउटपुट बढ़ेगा। अब यहाँ भी आउटपुट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर एंड दस एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। दिस इज इनडायरेक्टली, सो यू कैन राइट बोथ द थिंग्स कि डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी सरकार इनिशिएटिव ले रही है, लोगों के पास रोजगार जाए। अब इनिशिएटिव लिया, कुछ एम बना के लिया, तो उस एम पे एटलीस्ट 20% 15% कुछ लोगों के पास तो एम्प्लॉयमेंट आया। अब कुछ लोग भी एम्प्लॉयमेंट, एक हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से एक स्टेप पे, दो स्टेप पे पहुंचते हैं, तो उस दो स्टेप तक कुछ लोगों के पास नाउ दे हैविंग द सोर्स ऑफ इनकम, मींस नाउ दे गेटिंग द प्रॉपर जॉब, employment opportunity, and that are some steps which was taken by the government to improve the standard of living. So last in these only some schemes are launched by the government so that the standard of living is improved by getting the job for those people who are willing to work at the existing wage rate which was decided by the government. So Skills India, Make in India, Startup, these are the initiative. You can see the pictures also. Skills India, कौशल भारत कुशल भारत। वो कौशल भारत कुशल की वो स्किल्स है, कैपेबिलिटी है लोगों की, उस स्किल्स को अब यूज करना है। वो स्किल्स को कैसे यूज करेंगे, उनको रोजगार देके, बाय प्रोवाइडिंग देम द वर्क। मेक इन इंडिया, इंडिया बनाना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ये कुछ इनिशिएटिव है लॉन्च किए गए थे, और बाय हुम, बाय द गवर्नमेंट ओनली। These are some recently launched campaign by the government in India so that system will be improved, government to generate। और वो कैसे, ताकि हम बार बार यही बात कर रहे हैं, by providing the employment opportunity, by providing the people their work so that their wage rate will be increased। Clear? These camping are yet to actualize in the model, और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक साइन की तरह वर्क करती है, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों के पास रोजगार होगा, जितनी ज्यादा मैन पावर की स्किल्स को यूज कर पाएंगे, उतनी ज्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी विद द एम सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है, या हम जॉबलेस ग्रोथ की बातें नहीं कर रहे, क्योंकि उस ग्रोथ को इंडिया जैसी कंट्री में कंसीडर करना ही नेगेटिव एक्सपेक्ट है कि ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, नहीं, वो बिना लोगों के पास काम हुए। तो मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके आप ग्रोथ कर रहे हो, मशीनों की हेल्प से आप क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे हो। ऐसी ग्रोथ और डेवलपमेंट का कोई बेनिफिट नहीं। हु बिकेम रिच मोर रिचर and poor section that much poor means they are suffering from the starvation, that one growth is not beneficial in the our country which are considered is underdeveloped, developing, or you can say that poor country, because we are comparing it with the developed country। Clear? So these camping are yet to actualize for which purpose, for the growth and development of the country, without the aim of and without the growth like the jobless growth, it will not beneficial for our country। However, one can hope that once this scheme, अब hope यही थी, expectation यही थी
कि जितनी ज्यादा ये कैंपिंग लॉन्च होगी, लोगों की सोच में भी चेंज आएगा, स्किल्स होगी, नाउ दे आर एग्री टू द वर्क। नाउ तो जब वो एग्री होंगे, विलिंग होंगे वर्क करने के लिए, कैपेबिलिटी होगी कि उन्हें ट्रेन किया जाएगा, उनकी स्किल्स को, मैन पावर की स्किल्स को, एक्सपीरियंस को, एफिशिएंसीज को हम कंप्लीटली यूज कर पाएंगे। द इंडियन इकोनॉमी वुड जनरेट एविडेंट, वो जो अपॉर्चुनिटी है वो उन्हें मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली दोज थ्रू। अब वो क्या हो जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। एक तो उनकी चेंज थिंकिंग भी चेंज होगी, नाउ दे आर एबल एंड विलिंग टू द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड स्पेशली अगर उनको सिखा दिया, ट्रेन कर दिया, तो वो अपना कोई बिजनेस भी सेटअप करेंगे। अब वो अगर अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उसमें भी लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ लेबर को वहां से भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा। तो ये सब इनिशिएटिव है जो सरकार ने लिए, so that the improved system will be improved. So these are some topic, you can study these topic carefully, and tomorrow we will continue with the new chapter that is of environment and sustainable development. Till you can read this topic. I hope you like this video. Thank you. Have a nice day.